Hi friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. Welcome to another class of ethics and values. ले आम गतकाली पढ़ी आमर जो एक्चुअली सी अच्छी कोटा पढ़ी जेंडर प्रैक्टिसेस इन द फैमिली विषय पढ़ी तो आज आम पढ़ा जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली परिवार रे श्रम विभाजन माने लिंग को आधार करके जो श्रम विभाजन ही थाए से विषय आज पढ़ा यही क्लास रे जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर इन द फैमिली दिस द यूनिट सो इन ए हाउस होल्ड और अ फैमिली गोटे घर किंबा परिवार रे इन ए हाउस होल्ड और फैमिली मेन एंड वुमेन बोथ वर्क पुरुष भी काम करे स्त्री माने भी काम करते men and women both work but they do not do the work as they like किंतु जेते बेले प्रश्न उठे whether both are whatever work they are being given जो काम से मन को दिया जाए से मन को पसंद काम दिया जाए कि yes or no so they do the work they are allotted to do on the basis of their gender. So what type of work they do then? The question arises here. What type of work do they do? So they do the work they are allotted to do on the basis of their gender. Linga anusare, whether she is a female or he is a male, according to that, the work is being given. सेमन को काम करने पे दिया जाते हैं पुरुष को पुरुष भलिया काम दिया जाते हैं स्त्री को स्त्री भलिया काम दिया जाते हैं गोल गेमर मु कहूची मु क्लास करी यूएस क्लास भी करी बट वर्तमान मु जो क्लास करूची से क्लास रे कंसंट्रेट करो सो दिस सेक्स बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर एंड दिस सेक्स बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ वर्क ए जो सेक्स को बेस करी लिंग को बेस करी जो काम सब डिफरेंट डिफरेंट काम दिया जाए या को कहा जाए डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर लिंग निरूपण करी अन्य को काम करेगा जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड नाइदर ऑन कैपेसिटी नॉर ऑन रेशनैलिटी एंड दिस जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इट इज एग्जैक्टली नॉट बेस्ड ऑन कैपेसिटी और रेशनैलिटी एठी कैपेसिटी कार दक्षता देखा जाए नहीं कास्ट क्रीड रेस रिलीजन किसी भी देखा जाए नहीं not based on capacity not based on rationality but on age old practice and belief system ताहले केमती दिया जाए it is based upon age on belief system or practice system पूर्व कालरू परंपरा अनुजाई जो भलिया काम जे करूथिला से भलिया काम करूछि माने आगो पुरुष माने रोषे करुनथिले एबे भी करूनाहांती आग स्त्री माने झाड़ू मारुथिले एबे भी मारुचंती जोटा चलीथिला चिराचरित प्रथारे से जिंस ही चलछि एंड व्हेन वी क्लेम दैट आवर सोसाइटी हैज एडवांस्ड जेते बेले कि आमे कहूछि समस्त को दिन आमे कहूछे जे आमे बहुत डेवलप करी गलेनी नहीं वी आर टेलिंग दैट वी आर डेवलप्ड ट्रेडिशनल भाव यस कमलाकांत that women have occupied several public spaces आमे एडवांस करी गलेनी स्त्री माने बहुत बड़ बड़ जगार रही आम जानी आम प्रेसिडेंट वर्तमान ओडिशा जड़े लेडी अच्छा नहीं सो बिलीफ सिस्टम एज ओल्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस एंड व्हेन वी क्लेम दैट आवर सोसाइटी हैज एडवांस्ड दैट वुमेन हैव ऑक्युपाइड सेवरल पब्लिक स्पेसेस दैट दे आर विजिबल इन ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट फील्ड्स एंड दे आर विजिबल इन ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट फील्ड्स प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र रे सेमानक आमे देखि पारुछे सेमाने काम करूछन्ते वर्तमान युग रे ऑलमोस्ट ऑल इंपोर्टेंट फील्ड्स लाइक बोर्ड रूम्स then what space mission they have emerged as political leaders in our country village and national levels palli to parliament jaha kuha jauchi in every field every sector ladies are there their presence can be seen their presence can be seen प्रत्येक सेक्टर रे महिला मानकर प्रेजेंट आमे उपस्थिति उपलब्धि करि परिबा लेट अस आस्क आवरसेल्व्स
ताहले वर्तमान निजको प्रश्न पचारिबार समय अछि. लेट अस आस्क आवरसेल्फ if the gender division of labor in the family has been affected by these success stories. किंतु एते सबु स्त्री मानकर सक्सेस स्टोरी सफलतार कहानी ए सबु कहानी को देखिला परे ए विषय सबु जानिला परे ये सबु कहानी रो परिवार उपरे किछि प्रभाव पड़ी कि एटा होछि प्रश्न पचारिबार समय निजको प्रश्न पचारिबार समय. इन रियल लाइफ प्रकृत जीवन रे the number of women joining the employment market has gone up. वर्तमान स्टेज जे जदि देखिबा स्त्री माने तांकर जो रोजगार सेक्टर सब अछि तांकर एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़ी छि. नो डाउट देयर इज नो क्वेश्चन दैट देयर स्टैंडर्ड हैज बीन रेज्ड. एज लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैव जॉइन्ड द वर्क फोर्स. जो कार्य करिवार स्रोत अछि द करेंट ऑफ वर्क फोर्स ए वर्क लाइन रे बहुत सारा स्त्री बहुत सारा वुमेन माने जॉइन करिसंते. यस और नो a large number of women have joined the workforce but it has not relieved them from domestic work. एते सबु हेला परे जहा काम कले भी still they are doing the house chores. household work to सेमान को त्राही मिली नहीं. The situation of women doing white collar jobs is different from that of women on their daily wage. And the women doing white collar jobs भलो भलो चाकरी करुथवा स्त्री माने एवं गाँ गली रे रोथवा स्त्री मानक भितर जदि कंपेयर करा जाए still the same situation is being prevailed. Millions of women struggle to perform their domestic chores while doing work outside home. And at a time while they are doing work outside home and still they are to do the domestic work. माने दुईटा को कपअप करिवा पाए ऑफिस रे काम करिवे घर को आसिक रोसई करिवे एई जगह रे से माने दे आर स्ट्रगलिंग से माने संघर्ष करचंती. द वुमेन आर स्ट्रगलिंग. दिस प्लेसेस ए हेवी बर्डन ऑन देम. एहा द्वारा दुईटा काम संभाळिबा बेलकु जमती से माने अधा काम सेठी ऑफिस रे कले ऑफिस रो असला पर घरे कले छुआ पिलार माने सब जिंस देखिले एते काम कला बेलको एमान को ऊपर बेसी बोझ पड़ुछि. दिस प्लेसेस ए हेवी बर्डन ऑन देम. एंड टू ऐड मोर women's work at home is invisible. women's work at home is invisible. घरे करुथुवा काम स्त्री माने घरे जो काम सब करमती से काम काहाकू देखा जाए नहीं. इट इज इनविजिबल. आमे समस्ते जानी थिबा पिले दुनियार सबुठारु माने बेसी काम करुथुवा बिना पैसा रे काम करुथुवा व्यक्ति जनक होउचंती रादर आम माँ आर मदर. द वुमेन इनसाइड होम घरे रहउथुवा स्त्री माने अनपेड बिकॉज दे आर अनपेड से पैसा दि जाऊ नहीं से माने सैलरी पाती नहीं. दैट्स व्हाई देयर वर्क इज कॉल्ड इनविजिबल. से कामर कौन सी सम्मान ही न था. दे आर नॉट बीइंग एडमायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. इजंट इट? या. सो only paid or remunerated activities are defined as work in our society. आम समाज रे only paid or remunerated work जो तेरे पैसा दरमा दिया जाए किंबा कंपेनसेशन मिले पैसा मिले एक्स्ट्रा पैसा मिले ताकू आमे काम बोली कंसीडर करूछे नहीं. सो only paid or remunerated activities are defined as work. Paid or remunerated activities are only defined as work. ताकू केवल काम बोली कह जाउची. But a woman who does the bulk of the work in the family is never paid. Bulk of the work in the family माने घर भितरे मेंचा मेंचा काम करुथुवा स्त्री माने सब काम A to Z माने घर पोछा मारिबा ठारू पुओ को स्कूल पठेबा पर्यंत घर डिनर लंच ब्रेकफास्ट तैयारी करबा पर्यंत टोटल काम करुथुवा स्त्री मान को पैसा दिया जाए नहीं बोली तांको काम को किए देखि पारंती नहीं. Their work is not considered as work. Their activity is not considered as job, whatever it may be.
So family is never paid. So her contribution are never considered as work. And that's why, because she's not remunerated, she's not being paid. That's why, what happens, her contribution to the maintenance and development of the family, its member go unrecognized. Her contribution towards family, her contribution toward the member of the family, her contribution toward the cleaning of the family, her contribution towards, each and everything of the family is not recognized. ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ. And care has long been considered to be the natural responsibility of women. Care, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୋଲି ଆମ ସମାଜରେ ଧରି ନିଆଯାଇଥାଏ. ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଇଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ. ଏଇଭଳିଆ ଆମ ସମାଜ କହେ. ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ବଢ଼ୁଛେ, ସେ ସମାଜ କହେ. ମୁଁ କହୁନି, ତମେ କହୁନ, ଏଇଟା ସମାଜ କହୁଛି ଏ କଥା. Women's work within families is variously known as domestic work, and women's work in the family is known as domestic work. ଘରେ କରୁଥିବା କାମକୁ ଘରୋଇ କାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଲେ. Domestic work, known as domestic, then reproductive labor, care work, and emotional labor. These are the definitions that are given, the name that are given to the work of a woman. These work remain invisible or under recognized, and these work are remain what? Under recognized. এই কাম ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ନାହିଁ. ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍, ଏଇ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ. ଅନରେମୁନେରେଟେଡ୍, ଏଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାଉଣା ମିଳେ ନାହିଁ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଡିପି, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ପିଲେ ଜିଡିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଗ୍ରସ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ. ୟେସ୍. ସୋ national GDP account of the census, enumeration of work. तो आमर जो GDP हिसाब हुए, जितेबाला देशर मुंड पिछा आय हिसाब हुए, सेतेबेले भी से कामटा को कौनसी लोक अकाउंट को नियंती नहीं, कौनसी लोक तार हिसाब माने देखंती नहीं कि हिसाब हुए ही नहीं. Thus, there are many areas of human activity which are excluded from economic measurement. ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାନଦଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେଉଁ କାମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ 24/7 କରନ୍ତି, ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ. ଦ ଅନପେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ. ତ ଇଫ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦୋଜ୍ ଅନପେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, से भीतर कौन कौन जीव पिले. प्रथम जिनस हूँ हाउस होल्ड मेंटेनेंस, घर परिचालना करवा. द अनपेड सर्विसेस इंक्लूड हाउस होल्ड मेंटेनेंस, देन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, चाष काम साहाय्य करवा. वॉलंटरी वर्क, स्वच्छाकृत भाव में किसी काम करवा. फैमिली सस्टेनेंस, परिवार को चलैवा नहीं. Then family sustenance, then comes activities and reproductive work. आम समस्त जानी रिप्रोडक्शन कहले कौन मत एनालाइज कर आवश्यकता नहीं. all these are undertaken by women, and all those work whatever I told now, जो जिनस सब मु कहली, these are the work being undertaken by women only. यही समस्त काम स्त्री मानक द्वारा संपादित ही था. बट यही काम को कौनसी गुरुत्व, कौनसी इंपोर्टेंस दिया जाए नहीं समाज भितर. देशर जो जीडीपी हिसाब हुए, देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि जो हिसाब हुए, यही काम कौन महत्व न थाए. सो ए सिंपल एग्जांपल गिवन बिलो कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल वर्क. तक उदाहरण एठी अछि, मु कहूछि. On an average day, women globally spend about 3 times more hours on unpaid domestic and care work than men. एक साधारण दिन रे
On an average day, women globally, सारा विश्व रे globally spend about 3 times more hours on unpaid domestic and care work than men. मनीष मान पुरुष मान अपेक्षा 3 गुण अधिक काम करते प्रत्येक दिन. दिस इनक्लूड्स आउ यही काम भितर कौन कौन रहे पिले कुकिंग क्लीनिंग फैचिंग वाटर फायरवुड एंड अदर नॉन मार्केट एसेंशियल डेली टास्क विद इन हाउस होल्ड दिज वर्क्स को अनपेड आउ यही काम कौन पैसा मिले ना. सेकेंड थिंग इन सम कंट्रीज किछि देश रे इन सम कंट्रीज women end up spending 11 times more time than men on such task. Women spending 11 times more time than men on such task. 11 गुण अधिक पुरुष मानक ठारू 11 गुण अधिका समय काम करती यही सब कार्य को माने स्त्री माने. नेक्स्ट पॉइंट व्हेन समवन सेज शी इज वर्किंग वुमन जिते बड़े जड़े लोक कहे सी इज वर्किंग वुमेन से जड़े कम करुवा स्त्री बा महिला वी अंडरस्टैंड दैट सी इज डूइंग सम पेड जॉब. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड आम कौन बुझू दैट सी इज डूइंग एनी जॉब से कौन सी चाकरी करुवा व्हाई शी वाज बीइंग पेड जो पैसा मिलची. द रियलिटी इज दैट किंतु वास्तव जिनस कौन पे द रियलिटी इज दैट ऑल वुमेन आर वर्किंग. प्रत्येक स्त्री होचंती वर्किंग वुमेन. एवरी लेडी इज अ वर्किंग वुमेन. प्रत्येक स्त्री काम करते वर्किंग वुमेन है. सो वी हियर दैट माय वाइफ डज नथिंग और माय मदर इज अ हाउस वाइफ. बट नॉर्मली समस्ते कहते जिते गोटे पिला को प्रश्न करा जाए हु इज योर मदर व्हाट इज योर मदर समस्ते कहते माय मदर इज ए हाउस वाइफ. पिले हाउस वाइफ शब्दर संज्ञा जदि आम काढ़ा हाउस वाइफ कौन घर बाई स्त्री कौन घर बाई हाउ कैन यू टेल हाउस वाइफ वाइफ ऑफ द हाउस. दिस इज नॉट the proper definition. You mustn't tell like this housewife. This is what not dignified toward the work of women. स्त्री मानकर प्रकृत कार्य को एटा डिफाइन करि पारु नाही. सो डोंट से हाउसवाइफ or whatever you are telling. So they are homemakers. So instead of housewife you can say homemakers ना ता ऊपर कथा हुआ. My mother is a housewife. My wife does nothing like this. These are the kind of statements being used in our society. हम समाज रे बळ्या सब व्यवहार हुए. तम स्त्री कौन करते हाउसवाइफ सिंपल. Why? So housewife is a degrading term. मुझे जमती टिके आगुरु कहतली. This is a degrading term for women that is vividly being used by educated people, uneducated people, each and every individual in our society. प्रत्येक व्यक्ति ये जिनसटा व्यवहार कर हाउसवाइफ एंड इट्स ए डिग्रेडिंग टर्म. वी नो आम समस्ते जानिछे दैट नो हाउस नीड्स अ वाइफ. कौन सी घर को स्त्री आवश्यकता न थाए कौन सी घर स्त्री को बाहाई न थाए. नो हाउस नीड्स अ वाइफ. Women are actually doing the job of managing the affairs of households and women meant for managing the affairs of household. स्त्री माने नॉर्मली घरर समस्त काम करती घर को चलाते. दे आर द मैनेजर ऑफ द हाउस. एग्जैक्टली इफ विल यूज ए वेल डिफाइंड टर्म दे कैन बी कॉल्ड व्हाट they are homemakers and managers. So you can say my mother is the manager of our house. Instead of telling my mother is a housewife, you can tell my mother is the manager of our house. My mother is a manager. My mother is a housemaker. And these are the right words that to be used if you want to convey prestige towards women. जदि महिला मान को प्रकृत में आम भितर सम्मान देवाई इच्छा अच्छी we mustn't use the term housewife. Instead of we can use housemaker or house manager. So a set वर्तमान जदि डिस्कशन रो पॉइंट को जीवा पिले is there really a difference in men and women capacity to perform household chores like cleaning, cooking, fetching water, caring for sick, the aged and children? For such difference invented by our society, is there any difference? कौन रोषई कम पिला माने करि परिबे नहीं
निज लुगा निजे सफा करि परिबेनी पिला माने हैं पानी टिके आनी पी पारिबेनी पानी टिके आनी पारिबेनी जदि प्रश्न उठे पिले नहीं. So traditional mindset relating to care functions within the home for women and doing a remunerative job outside its confines for men have no basis in reality or unfair. So जो ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल जो सिस्टम अच्छी से सिस्टमटा को स्त्री मान ऊपर आम जो लदी दौचे बिकज माय मदर वाज डूइंग सो थिंग्स दैट्स व्हाई माय वाइफ विल डू सच थिंग्स दिस इज नॉट गुड एटा ठीक नुह नहीं. When the time devoted is longer, the physical exertion, emotional involvement are too heavy, why then women work is unrecognized and underestimated. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି by all near and dear ones and family members. So you are correct, Manaswini. Yes, beta. Yes, I agree. I strongly agree with you, beta. So they are physically doing much more than the men. They are emotionally attached much more than men. They are taking care much more than men. Still their work is unrecognized. Isn't it a silly question to be asked by us? So boys need to take pride in doing the chores women perform and vice versa. Don't you feel we exploit our women by not acknowledging their work and treating them as non-workers? So still the lady who is doing such type of job in our home, who is working constantly 24/7, why should we not recognize their work? Why should not give them privilege? Why should we not admire their work? Here is the question. Each and every citizen of India and each and every student must ask themselves why such lady mustn't be praised, mustn't be given a social status. Why should not they be called working lady? Don't you feel women's invisible work cases our lives at home and outside? So don't you feel women's invisible work is our lives and home and outside? तमें भाव ना कि माँ अच्छी बोली तुम आराम रे कॉलेज को जाई पारुछ, माँ अच्छी बोली सकाळु तुम ब्रेकफास्ट खाई पारुछ, माँ अच्छी बोली तुम माने ड्रेस प्रेस हो पारुछ. So everybody should think about it. Jobs can be shared in a family by everyone in the family, and training needs to be imparted to children from early childhood. And to add more, this work, whatever work is being done by only ladies, those type of work must be distributed within all family members. प्रत्येक लोक मिलिमिशिकी जदि से कम करते छुआ बेलू पिला मानू भी जदि माने गोटे झीर कम जोटा आम जो झीर कम पुअर कम न कहीकि यही कमटा तू करे यही कमटा से करू एभला जदि शिखाते छुआ दिनू ही समस्त भितर ये जिनटा डेभलप होता हाँ ना नहीं. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, can the financial and household loads be shared between men and women in a family? Is it a great job to accomplish this? So why not the work should be divided between men and women? प्रत्येक काम कहीं स्त्री और पुरुष भितर बंटा जाओ ना. आम स्त्री को कहीं केवल घर सजेवा जिनस बोली भावुचे. This must be asked by ourselves. निजे निजको प्रश्न पचारिबा दरकार. And women's work at home needs to be acknowledged and appreciated. And whatever work women are doing inside home and whatever work they are doing, they are being unpaid and unremunerated. That work must be appreciated. से वर्क को निश्चित भाव प्रशंसा करवा दरकार. से वर्क को निश्चित भाव गोटे सम्मान मिलवा दरकार. तो पिले आज तो समय जाइछि. आसंता काली आमे पढ़िबा मैरेज एंड वुमेन, विवाह एवं स्त्री रो भूमिका सेठी कौन हुए, विवाह रे भी केमिति लांछित होमते स्त्री माने झियो माने, से विषय काली पढ़िबा 8:30 रे. See you there. Stay tuned, Master of English. Bye bye.